भगवते वासवानुतीर्थज्ञा शिशुवासो निशम्यवासं वरतो मुने पुण्यतमानुको भूयो प्रपश्यो कौरव्या वासुदेवो कथादित विदुरुवाच सो वै स्वयंभुवो सम्राट् प्रियो पुत्रो स्वयंभुवः पतिलभ्यो प्रियां पतिं किं चकारो ततो मुने तरितं तैषो राजर्षे राजीराजैषो सत्तमः ब्रूहि मे सद्दरानायो विश्वक्सेनाशयो दशो सूतैषो पुंसां सुशिरश्रमेषो नन्दन यशा सूरिभिजितो अर्थ तत्तद्गुणानु श्रवणं मुकुन्दोपापदारविन्दं हृदयेषु तेषां शिशुवाच इति ब्रुवाणा बीजुरं विनीतं सस्यशीर्ष्णा चरणोपधानं प्रेषरोमा भवरथायां प्रणीयमानो मुनिरव्यषष्ठ श्री मैत्री उवाच यथा स्वभार्याया सार्धं जातो स्वयंभुवो मनु प्राञ्जलि प्रणतोच्चेदं वीरगर्भमवासत तमेव सर्वभूतानां जन्मकृतवृत्तिरोपिता अथापि नो प्रजानां ते शुश्रूषाकीनो वा भवेत् तद्विधेहि नमस्तभ्यं कर्मन् वीरज्य सतिषु यत्कृतेहो यशो विश्वमूत्रोऽसो भवेद्गति ब्रह्मवाचो पितस्तुत्यामहं तातो स्वस्ति त्वद्भ्यां क्षितिस्रं जनि बलिकेनो हृदा साधिमेत्यात्मा नार्पितम् यथा वैत्यात्मजीवीरो कार्योऽध्यापतिचर्गुरु शक्त्या प्रमते गृह्येतो सादरं गतमस्सरे सोतमेष्यामपत्यामि सदसंज्ञा नमो गुणे उत्पद्यो समो सासो धर्मीनुगां यज्ञै पुरुषं यत् परं शुश्रूषणं वैद्यं स्यात् प्रजारेखिना नृपो भवांस्तासे प्रजा भर्तु ऋषिकेशो नो तुष्यति येषां नो तुष्टो भवान् जगलिङ्गो जनार्दन तेषां श्रमो ढपर्थायो जरात्मानान्दितोऽस्य मनुर्वासो आदेशेऽहं भगवतो भारतीय मनुष्यजनो स्थानदित्वा धनुजानीहि प्रजानां ममोचो प्रभा जतोकः सर्वभूतानां महिमग्नामहमसि ऐषा उद्धरेण जतो देवो दिव्या विधीयता मैत्रिर्वाच परमे स्थितपां मध्ये त्रीणां सन्नामवीक्ष्योऽस्गा कथनेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धियाचिरं सीजतो मे क्षितिवाभि प्लव्यमानरसङ्गतः अथत्रो किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गजोषितैः जैस्याहं हृदयादासं सो ईशो वेदु विदधातु मे इत्याभिध्यायतो नासाद्विव्राट् शशानगो वराहकोठो निगरात् अंगुष्ठ परिमाणकः तैषाभिपैशतो खष्ठो खनेनो कीलवारतो गजमात्रो प्रबुभ्रीषे तद्भूत अभुन्मः मरीषि प्रमुखै विप्रैर्कुमारैर्मन्युना सह दृष्ट्वा तत्सूकरुं रूपं तर्कयामासु चित्रधा किमेतं शूकर व्याजं सप्तं दिव्यमवस्थितम् अहोवटां चरितमिदं नाशाया मे विनिश्चितं दृष्टो अंगुष्ठशिरो मात्रो क्षणात् गन्धविलासम् अपि सित् भवानेषु यज्ञो मे खीदयान् मम इति मीमां सतस्थेषु ब्रह्मणोऽसौ सूनुभिः भवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः ब्रह्माणं हर्ष्यामासु हरितांसो द्विजोत्तमः स्वगर्जितेनो ककुभो प्रतिस्वनयता विभु निसंयोते अर्घरीतं सुखीदसंसु मायामयशुकरिष्य अनन्तपा शैत्यनिवासी जनन्ति त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो
गृह्णन् स्म तेषां सतां वेदवितान् मूर्ति ब्रह्मावतात् पदर्जात्मा गुणानुवादम् विनद्य भूयो विविधो अथा दयायो गजन्दलीलो जलमीमावेश ऊर्क्षिप्तावलो खसरो कठोर तथा विढन्नन् खररोममसक्तः खुराहटा बभ्रः शीतदंसा ईख्या ज्योति भवासे भावान् महीन्द्र ग्रहाणेनो पृच्छा पदवीं विजिघ्रन् क्रूरपदेशो स्वयमब्धरङ्ग करालदंस्रोप्यकरात् जगद्धिक् व्यामुद्भिक्षो विप्रान् क्रीणतो अभिषट्कं सो वज्रकूटाङ्गनी पाटवेदविशीर्णकुक्षी शनैशून्नादो ऊर्षिजदीर्घोर्मी विभूरि वार्तासु क्रोशो यज्ञस्रपाहिनीति शूरैर्शूर प्रजैर्वंशाटाटो उत्पाट अपारपारं त्रिपरुरसायनं ददर्शगां तत्रो शूरग्रेजां जीवरानं स्वयमध्यरट्ट सोदंसो उद्धीतो महिं विलग्नासो उत्थितो शूरुरुचिरसाय तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं शूनाभ सन्दीपीत तीव्रमन्योः जहानुरुद्धानमवध्यविक्रमं श्रीलभीतं मृगयादिविरम्बसि तद्रक्तपङ्काङ्कित गण्डतुण्डोदरा गजेन्द्रजगतिं विभिन्नं तमालनीलं श्रीदन्तकोट्याख्नामुष्खीपतङ्गजलीलयाङ्ग प्रज्ञायो जद्वाञ्छल यो अनुवाक्यै वीरिञ्ची मुख्या उपतस्थुरीशं श्रीदिशेषु जीतं जीतं तीयजीतजज्ञावनो त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्नतो नमः दद्रोमगर्तेषु नीलिन्यो लब्ध यस्तस्मै नमो कारणशुकरायो शुक्रायसु रूपं तवै तन्नूर्नु दुष्कृतात्मनां दुर्मशनं देवो जड्बाञ्जरात्मजं छन्दांसि जैशोटसी बर्हि रोमसज्जंसि जीजरङ्घि चातुर्भट्टञ्च स्रक् तुण्डो आसीत् स्रक् ईशो नाशयो ऋजीवो समसो कनरन्ध्रे प्राशिसमात्रे कृशने ग्रासु ते वर्षर्वणं ते भवन्निग्रहोतं दीक्षानुजन्मोपसवो शिरोधयं त्वं प्रायणीयो दयनीदंश्च जीवः प्रवर्गस्तवो शीर्षिकं क्रूतो सत्यावसख्यां चिन्तयोऽवथो हीते सोमस्तूरेतो सवनान्यवस्तिभिः संस्थाभिभीरस्तव देवो जातव सत्राणि सर्वाणि शरीररससण्डयोस्तन सर्वज्ञो क्रतुरिष्टि वन्दन नमो नमस्ते अखिल मंत्रदेव तद्द्रव्यद्वयो सर्वक्रमक्रतुरूटवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजानुभाव विरतज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः दंष्ट्राग्रकोट्या भवंस्तया धृत्वा विराजति भूधरोभ्यो सबूदरा यथा वन्नामन्नी शरतो दटाधीतामटङ्गजन्देशो सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमीदं च शूकरं भूमण्डलो नाथो दटाधीतेन ते चकान्ति शृङ्गोरः घनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रेषु यथैव विभ्रम संस्थापयैनां जगतां संसुतां लोकायो पत्नीमसि मातरं पिता विधेमोसस्यै मनसा सवो त्वया जयस्यां स्वतेजसो अग्निमिवारबाध को सद्दधि तन्यतमस्तवो प्रभो रसाङ्गताया भुवो उद्विग्रहणम् नो विस्मयोऽसौतै विश्वविस्मये जो मायेदं सोऽसीजेयति विस्मयन् बीजोन्नत वेवोन्नता वेदवेदं निजं वपुर्जनस्तपा शैत्यनिवासिनो वयं
शताशीगोद्धूड वीराम्बो बिन्दु भीरिभीष्यमाना भुजमीशो पाविता शोभैवतो भ्रष्टमतिस्तशेषौ तेजो कर्मणां परमकारक कर्मण जज्जो माया गुणयोग गहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेशं श्रीमैत्री उवाच इत्यप्यस्थियो मानोषु मुनिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले सो पुराक्रान्तो उपाधत्ता विटावनि सो इत्थं भगवानुविंबिसक्सेनो प्रजापति रसाया लीलयोन्नीता मप्लुन्यस्यो जजौ हरिः जो ये वो मेतां हरिर्मीरसो हरे कथां सुभद्रां कथनीय मायिका सिन्निचो भक्त्या सवेद्यो बोसतिं जनार्दनो ऐशासु धीधि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशीषां प्रभो किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अन्यन्यदृष्ट्वा भजता गुहाशयो स्वं विदत्ते स्वयं परोपरा को नामो लोको पुरुषार्थो सारवि पुरा कथानां भगवत् कथासुधाम् अपीय कर्णाञ्जलिभिः भवापहामो महो वीरज्योत वीणा नरेतरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे पृथिव्युद्धरणं नामो त्रयोदशोऽध्यायो श्रीमद्राधा गोविन्द कृष्ण प्रत्यानंद बल हरि बोल हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्दशोऽध्यायो श्रीशुकोवाच निश्चैम्यो कौसार वीणोपवर्णितं हरे कथां कारणसुकरात्मनः पूर्णोऽसौ प्रोप्रसूतमद्य ताञ्जलिर्नो चाति तत्तो विदुरोद्धृतव्रताः। श्रीविदुरोवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठो हरिणा यज्ञमूर्तिना आदित्य हिरण्यख्यो हतो इत्यनुशुश्रुमा तैश्रोद्धरतो ख्यौनिं स्वदंसग्रेणो लीलया दैतराजयिषु ब्रह्मन् कस्मद्धि ओतारभुन्मृधः सदधाना भक्ताय ब्रूहि तज्जमं स्थिरम् हरिजेनो त्रिपति मनः परं कौतूहलं हि मे। श्रीमैत्रीवाच सारवीरो त्वया पृष्टम् अवतारकथां हरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषाटनि जयोत्तानपदः पुत्रो मुनीनां गीतयार्भक मृतो कृतैवो मुद्धाग्निः मारुरोः हरे पदम् अथत्रा इतिहासेयं
श्रुतो मे वर्णितो पुरा ब्रह्मणा देवी देवेनो देवानां मनु शिष्यता दीर्घायनी खट्ट मारी सिंह कैसे पंगतिम अपैत्यकामो सखमे संध्यायां ऋषयार्दिता ईष्ट्वाग्नि जीवहं परया पुरुषं दिवसां गतिं निम्नो सर्वार्थमासीनमग्नकाये समाहितं श्रीदितिरुवाच ये सोमां तत्प्रीते विद्धन् कामो आटत् सरासनः दुनेति दीनं विक्रम्यो रम्भामेवो मतङ्गज तद्भवान् दध्यमानायां स्वपत्नीनां समद्धि प्रजापतीनां भद्रन्ते मज्जाजुंता मनुग्रहं भर्तर्याप्तो रूमानानां लोकानां विशतेजस पतिर्भवद्बीजो दासां प्रजायाननुजायते पुरापिता नो भावान् देख्यो दुहि त्रिवत्सला कंग्रीनीतो वरं वत्सा इत्यप्यस्थितो नो पृथक् सोभिदित्वात्मजानानो भावं सन्तनभावनः त्रयोदशाददात्तासां जस्ते शीलामनुव्रताः अथो मे कुरु कल्याणं कामं कमललोचना आर्तोपसर्पणं भूमन्मोघं हि महीयसि इति तां वीरो मारि कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रविद्यानङ्गकस्मला येषोतेऽहं विदस्यामि प्रियं भीरो दरिष्यसि तैषा कामं नोको गुरुजात्सिद्धिस्तैवर्गिः जटः स्रवसमानुपादायो षष्ठमानौ कलेत्रं व्यासनार्थाय मायति जलसानैरिवर्णवम् यामाभूरात्मनोध्यर्थं श्रेयस्कामैषो मानि दैशां सोऽधूरमज्जस्व पुमांसरति जिह्विद्र जामाश्रितो इन्द्रियाराटिन् दुर्जायानितरश्रमद्भयं जलेमो हेलाभिर्दैस्युमो दुर्गपतिर्जरा नोभयं प्रभष्टां त्वामनुकर्तुं लेश्वरि अप्यायुषा वा कर्ष्णेनो जे सैन्ये गुणविद्धव अथाविकामेत ते प्रजत्ते करवैल्यं यथा मां नाति वोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय येषा घोरतमापेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति दृश्यां भूतानि भूतेशानुचराणि एतस्यां सप्ति संज्ञायां भवान् भूतभावनो परितो भूतपरिजद्भिः वृषेणाटरिति भूतरात् श्मशानचक्र नीलधूलिधूम्रवीकी विकीर्णविद्योत जटाकलाप भस्माद्बगुण्ठमाररूपदेहो देवस्त्रीभिः पैषति देवरं रस्ते नो देशु लोके स्वजनपरो वा न तद्धृतो नोतो कचिद्विगर्ह्य भयं प्रति सर्जमाना विद्धामाशा स्मदीयतां वटो भूङ्क्त भोगां दैशानविश्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्ति विद्यापतलं भिविस्सवः निरस्तसैन्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाच चर्यामसरद्गतिः सताम् असन्ति दैशाचरितं हि दुर्भगां स्वात्मानवतैषा बीजुरो समीपिहम् दैवतन्त्रमल्याभरणानुलेपनैः सभोजनं स्वात्मातयोपलपितं ब्रह्मादयो जो क्रीतसेतुपाला जत्कारणं विश्वमिदं च माया अज्ञाकारी जैषो पिशाचर्याहो विभ्रमचरितं विरम्बनं श्रीमतिर्वाचो शैवं संविदितेत भद्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहो व्यासो ब्रह्मर्षेर्भीषलीभो गतत्रपा सोऽविदित्वाथो भर्रायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टारिरसितोप अपिवेशः अथोपस्पृशो सलिलं प्राणायानन्यो वाग्यतो ध्यायन् जलापो वीर्यं ब्रह्मो ज्योतिसनातनम् दितिष्ठो वीरिता तेनो कर्मबद्धेन भारतो उपसंगन्यो विप्रर्षि मधो मुख्याभ्याभाषत दितिरुवाच
नौमी गर्भमिदं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभोऽवति रुद्रद्रु पतिर्भूतानां जैषो कारणमंसन नमो रुद्रायो महते देवायो ग्रायो मीरुषे शिवायो न्यस्तदण्डायो बीजदण्डायो मन्यवे सो नः प्रसीदतां भावो भावानु उर्वनुग्रह व्यादेशप्यानुकम्प्यानां स्त्रीणां देवो सतीपतिः मैत्रिवासो सो सर्गस्याशीषं लोक्या माशासानां प्रवेपतिं निवृत संध्या नियमो भर्यामहो प्रजापति एकशभुवासु अप्रायत्यादात्मनस्ति दोषान्मो हूर्ति कारुत मन्निदेशाति चारिणो देवानञ्चाति हिरण भविष्यतस्तवा भद्रा भद्रो जाठराधं लोकान् स्वपालान् स्तिंसन्ति मुहुर्ग्रा दरिष्यति प्राणिनां दध्यमानानां दीनानां कृताशकम् स्त्रीणां निगृह्यमानानां कोऽपि तेषु महत्त्वसु तदा विश्वस्वरः क्रुद्धो भगवल्लीला लोकभावनं हनिष्यत्याति वीर्यासु यथा धृन् शत पर्वध्रि श्रीदितिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सूना भोदारबाहुना आशासे पुत्रयोर्मध्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणात् प्रभुं नो ब्रह्म गूढदग्धैषो नो भूतभयदैषसु नरकाच्चानुगृह्णन्ति जाङ्जां योनिषो गतः एकशवुवाच कृतशोकानुतापेनो सद्यो प्रत्यावमर्शन भगवत्यु ऊरुमानन्दो भवे मद्यपि चादर पुत्रसैवशो पुत्राणां भवित्यैको शताङ्मतः गासन्ति जज्जसः शुद्धं भगवत् जशसा समम् योगैर्धेमेवो दुर्वनं भावयिष्यन्ति साधवो निर्विरादिजीरात्मानं यशीलमनुवर्णितुं जत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति जरात्मकं सोऽग्निर्भावान् जैषो त्वयिष्यति अन्यथा दशा स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठ प्रविद्वत्या मनुषा सवितासे निर्विशोद्य वैकुण्ठ विहास्यति अलम्पटो शीलधरो गुणकरो दृष्टो परार्ध्या कथितो दुःखितेषु अभूतशक्रु जगत शोकहर्ता नैदाघिकं तापो निबोरुराज अन्तर्वैशालमलजनेत्रं स्वपुरुषे सानुगृहीतरूपं पुत्रस्तवो श्रीललनान् ललां दृष्ट्वा स्फुरत् कुण्डलमण्डितान् मैत्रिवाच श्रुत्वा भागवतं पुत्र मोदतो दीभिर्वृशं पुत्रयोच्यो वरं कृष्णात् दित्वा सिन्महामनाः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंसंहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे अदितिगर्भाधानं नाम चतुर्दशाध्यायो श्रीमद् राधा गुणकृष्ण प्रियानंद बोल हरि बोल। पंचदशाध्यायो श्रीमैत्रेयवाच ओं नमो भगवते वासुदेवाय। प्रजापत्यां हि तत्तेजो परते जोहनं दितिः तर्हारुवर्षाणि शतं शङ्कमानो सुरर्दन लोके तेनानुलोके लोकपाला हतोजसु न वेदयन् विश्वसृजे ध्वन्ता व्यतिकरन् ऋतिशां श्रीदेवावसु तमो यत विभो विश्व संविघ्नाद्वयं वृषं नोध्यभक्तं भगवतो कालेनाश्रिष्टवर्पण देवदेवो जगद्धात लोकनाथो शिखामणे अपरेशां त्वं भूतानामसि भाववि नमो विज्ञानगिरिजायो मायत्
मुपीजुषे गृहीत गुण भेरायो नमस्ते व्यक्त जोने जे त्वानन्येन भावेनो भावयन्त्यात्म भावनम् आत्मनि प्रोटभुवनं परं सरसरात्मकं येषां सुपकयोगानां चित्तश्वासेन्द्रियात्मनां लब्धा जुष्मत्प्रसादानां मुकुटति पराभवो जैसा वाचा प्रजा सर्वा गावश्चैवो दन्तिता हरन्ति बलिमायता स्वस्मिमुख्यायुमुख्यायुते नमः सोटुं बीजस्व संभूमन् तमसा लुप्तकर्मणाम् अरदत् भयविहारदृष्ट्वा आपन्नारसि शिक्षितुम् येषो देवो दीते गर्भो अजो कैश्यपमर्पितम् दिषष्टि मीलयन् सर्वा ये दते अग्नि यदि वैदसि मैत्रिवाच सोप्रैषो महाबाहो भवान् य शब्दगोचरो प्रत्याचश्चात्म भूदेर्वान् प्रीणञ्जुशिरसा गिरा श्रीब्रह्मोवाच मानसा मे श्रुताजुष्मत् पूर्वजासनकालयो शेरुविहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहा तो एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनो जजुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं वसन्ति यत्रो पुरुषा सर्वे वैकुण्ठमूर्तयो ते निमित्तनिमित्तेनो धर्मे नारायणार्हं हरिं यत्रो त्यज्योपमानन्ते भावान् शब्दभूषणा सप्तं विष्टभ्यो विरजं स्वानानो मिहन् दृशः यत्रो नै शेषं नामो वनं कामदुगैर्द्रुमैः सर्वर्तु श्री विविधभ्राजं कैवल्यमीवो मूर्तिमत् वैमानिका स्थलनातरिराणि सस्सगायन्ति यत्रो समलक्षपाणि भर्तु अन्तर्जले अनुविकरन् धूमावविना गन्धेनो गन्धितो धियोऽप्यनीलं क्षिपन्त परावतान्यभीषसार सचक्रवाक् दातु मैत्युधनं सुकोटीति वैनां स्म कोलाहलो वीरमते हरिचरित्रमुच्चैः भृशङ्गपीठे हरिकथामिवो गायमाने मन्दारकुण्डकूर्वत् फलचम्पकार्णवो पुन्नागनाग बकुलाम्बूज परिभ्राजत गन्धे अर्चिते तुलसिका भरणेनु तैस्यास्मि स्तपो सुमनसो बहु मामनयन्ति तत्सङ्कुलं हरिपटान् किमात्रा दृष्टै वैदुर्यम् आर्कोतमे मयि भीमाने येषां बृहत् कथिततास्मीतसो विमुख्या कृष्णात्मानां नो रजो आदधूरुस्मयज्ञै श्रीरूपिणी कनावती चरणारविन्दं लीलाम्बुजेनो हरिस्वस्मनि मुक्तदोषा संलक्ष्यते स्वतिकुण्डकुज्यो उपेते अस्मिन् सन्मार्जमिवो ददनुग्रहणे अन्यजत्नः वापीषु विद्रुमरतस्व मलामृतस्सु प्रसन्निता निर्वेणो तुलसीभिरीशम् अभ्यर्सति स्वलङ्क मुन्नसमीख्यो वक्त्रमुष्य स्फीतं भागवते मताङ्गिजस्य जन्नो व्रजन्त्यागविदो रोचनावाटा सिन्नन्ति ये अन्या विषया कुकथामतिग्नि जस्तु श्रुता हटवै भगैर्नीणां भीराट् सारस्तां स्तान् क्षिपन्त्या शरणेषु तमः सुवहन्त ये व्याधिरामपि सो नो निगतिं प्रपन्ना ज्ञानञ्च तत्तो विषमं सो धर्मदत्र नारायणं भगवतो वितरान्त्या मुख्या सन्मोहितर्जा विजयावतो मायाति जत्यो व्रजन्त्या निमीषा विषभानुविद्या दूरे समाधुपरिणो श्रीहयनीयशीला भर्तुमीठो सुजशसा कथनानुराग वैकल्प्या बाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः तद्विशुद्ध गूर्वधीकृतं भुवनेकवन्द्यं दिव्यं विचित्रव्यूढाग्राम्या मानसोऽसि आपूपरां वदनपूर्वमुपेत्यजो मायावलोकिनो मुनेस्तरोपीकुण्ठं तस्मिन्नवीख्यो मुनयो
सरजज्जमाना कक्षा समान वयवा सारवो सप्तमाया देवावस चटो गृहीत गतौ परर्धा केयूर कुंडल किरीट बीतंक बेसु मत्तद्धीरे भवना मालिकया निवीतौ विन्यस्तायासि चतुष्पया बाहुमध्ये भक्तस्रवा कुटिलया स्फुट निर्गमाद्या रक्ते खनेनो मनग्रवशं दधानो द्वार्योतयोर्निविशूर्विशतोरस्पृष्टो पूर्वाशा पूरितभद्रकवाटिकाया सर्वत्रोते विस्मया मुनियो सोदृष्टाति संचरन्त विगत विगत भीशंका तान वीक्ष्यो बाटवसनं चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसु विदितात्मतान् बेतेनो शृङ्खलायतमा दर्हनांसु तेजो विहैषु भगवद प्रतिकूलशील तभ्याङ्मी यत् शनिमीयेषु सुयुध्यमाना सोहर्तमाध्यपि हरे प्रतिआदपाने पाद्याम् ऊषु सुरितमा दिदीक्षित भंग ईसत् कामानुजेनो ससासु उपप्लुतख्या इमुनेषु को वा हेतो भगवद परिसर्जायु तैस्तत् धर्मिणां विवसतां विषमो स्वभाव तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे बांको बाष्पवत् कुहकयो परिशङ्कनीयो नोध्यन्तरं भगवती हो समस्तकुख्यावात्मा नमात्मनि नभो नवशीवधीरा पैसामि यत्रोजुवयो शूरलिङ्गिन किङ्कृपाठध्युत् दर्भीति भयं गतोऽस्य तद्वाममुष्य परमेशो विकुण्ठभर्तु कर्तुं प्रकृष्टमि हो धीमहि मन्दधीर्भ्याम् लोकानीतो व्रजतमस्तर भावदृष्ट्वा पापीय शस्त्रो इमे निभवोष तत्र तेषामीति लीलमुभावर्य वधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमणिनिवारमन्त्रपूकै सज्जो हरेरनुसरम्बुरु बिभ्याटस्तत्पाद ग्रहावतामतिकरा कातरेण भूयार्जोनि भगवत् वीरकारी दंडो जो नो हरेतो शूर हीलनमत शेषम माभो अनुतपकलया भगवत् स्मृतिग्नो मोहो भवेदियो तु नो विरुतो बरोध एवं तस्सैवो हावान् नरबिन्दनाभो स्वाना विबुद्ध्यो सरसि सरति क्रमं मार्जधीत्य तस्मिन् जजो परमहंस महामुनिना मध्य हे शनि रोचरनौचलयन् सहस्री तत्त्वागतं प्रति अधीतोपैतं सो कुम्भीभिस्तेक प्रख्यातख्यविषयं सुषमाभिभाग्यं हंसश्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोलसद्भ्रातपत्र शशिकैकेशयन् शीकराम्बुजम् कृष्ण प्रसादात् सुमुखं श्रीहयं निधामो स्नेहावलोककलया हृदि संसृज्य सन्तं श्यामो वृषाभूरसि शोभितया श्रिया सोचूडामणिं सुभगन्तामिवात्मधिञ्चं पीताशुके पृथु नीतं वीनि विस्फुरन्त्या कांस्यालिभिूतनया वनमालयासु बल्गुप्रकोष्ठबलयां विनतं सूतांसि विनष्ट हस्तमीतरेणु धूनानब्जं विद्युत्कीपं मकरकुण्डलगूलं गुणारर्णादस्थो लोल्ल सोमुखं मणिमत्किरीटं दोर्दण्डसन्धविषये हरता परर्धहारेणो कण्डरागतेन सुकौस्तुभेन तत्रोपसृष्टमिति स्मित मण्डिताय राया स्वानां धिया विरजितं बहु सौष्ठवाच मध्यं भवैष्य भावाटन्तु भजन्त मङ्गनेमुनिरीक्ष्य नो भीति तदिशो मूडाकै
तैषारविंद नैनेशपटारविंद किंजलक मिश्र टूल मकरंद वायु अंतर्गतो सभी बरेनु सकारो तेसां संख्यो मैखिरजूषामपि चित्ततन्न तेवामीशोवदना सीता पद्मकोश मुद्भिक्षो सुंदर तराधर कुंडास लब्धाशीषो पुनर्तदीयमंघ्यद्गलं नखारूण मणिश्रमणं निदध्यौ पुंसांगतिं मृगयाटामियुः योगमार्गे ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिराम पौष्णं वपुर्दशयानं दशयानामनन्यसिद्धै रौथ पट्टिकै समवृन्दन् धूममस्तभोगै हे कुमारावसु जो अंतर्हितो गिरिगतोषु दुरात्मनानां त्वं न दैवो नो नयनमूलमनन्तरब्ध दर्हेवो कर्णा बीवलेऽनुबुद्ध्यं गतो नो पित्रा नो वर्णीततरा भवद्युत्तवेनो तं त्वां विराम भगवन् परमतत्त्वं सत्येन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषां दत्ते अनुताप विदितगुरुमिरः भक्तिर्योगै रुट् ग्रन्थयो धीदि विदुर्मुनयो विरागः नैत्यन्तिकं विगणयन्त्यापि ते प्रसादं किंस्वत् अन्यर्पितभग्नं भ्रुवः पुनैति दे अङ्गतुरङ्घ्रिशरणा भवतु कथाया कीर्तन्या तीर्थदशः कुशला प्रसद्या कामं भवोऽसो बीजीनीरेषु नष्ट्वाच्योर विबलेषु ते पदयोरमेत भातच्चो नष्टल शिवज्जति ते अङ्घ्रिशोभा ऊर्जाते गुण वर्जात् कर्णरन्ध्रः प्रादुर्सकर्थजरितं पूर्वभूतरूपं तेनेषु निर्वृति बवा पूर्णं दिशो नः तस्मादिदं भगवती नमो इद्विदेवो जो अनात्मा दुर्दैव भावान् प्रतीतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे वैकुण्ठवर्णनं नाम पंचदशाध्याय श्रीमद् राधागोविन्द कृष्ण प्रजानंद बोल हरि बोल। ओं नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्याध्याय श्री ब्रह्मवाच इति तद्गृह्णतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां वसिन्यो जगाद्देद विकुण्ठो नीलयो विभवन्वासो ये तौ तौ पार्षदौ मध्यं जयो बीजयो ये विशो कदर्थीकृतमां जद्भो बहुः क्रान्तामतिक्रमम् जज्जेतयोर्धितो दण्डो भवद्भीमामनुव्रते सूर्यवानुमतो अस्माभिर्मुनयो धे अहिरना तद्वो प्रसादय मासाद्यो ब्रह्मदैवं परं हिमे तद्विख्योमात्मगीतं मन्ये सोपूरं भीषत्कृताः जन्नामानिषु गृह्णाति लोको भृत्यो कृतागसि सो असाधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति तस्मीवामय जैसामृतामलदश श्रवणापग्राहो सज्जो पुनाति जगदास्वपसाद्विकुण्ठ सोऽहं भवद्भ्या उपलब्ध सुतीर्थकीर्तिसिन्दां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिदं दत्सेवया चरणपङ्कज मित्रवेणुं सज्जाख्यताखिलमण्डं प्रतिलब्धशीलं नो श्रीवीरक्तमती मां विजहातिदेश्य प्रख्यालवार्थमितरे नियमानुवहन्ति नाहं तथास्मि यजमान वीर्वीताने नोजो तद्धीतप्लूटमदन् कूटभूमखेन यद्ब्रह्मानशो
मुखटत्तरनो अनुघातं तुष्टेषु मज्जा भैतैर्नीचकर्मपाकै येषां विवर्म्याः खण्डविकुण्ठयोगमाया विभूतिमलङ्घ्रीरतो कीर्ते विप्रानुको नो विषहेतो जदर्हाम्ब सज्जो पुनाति सो चंद्र लालसा लोकान् जे मे तरनो द्विजवरान् दूह तिर्मदीया भूतन्यलब्ध शरणानि श्रीभीड बुद्ध्या द्रक्षन्ताख्यज तद्रीषु गहिमन्यवस्त्रान् गृह्णारुषा ममो कुसन्त्याधिगुणेषु ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोरर्षयश्च तुद्धिदयो स्मितसुखोक्षित पद्मवक्त्रा वन्यानुरागकलयात्मजोवत् गृह्णन्तु सम्बोधयन्त्यामि वा अमुनुपाकृतस्ते तन्मे शोभर्तु रपसाय मलक्षमालो दुष्पद्गतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिका मीता तदनुग्रहोन्मीजत् कल्पयामि सरतो भूयोर्विरासो ब्रह्मोवासो अथोतेषु सतीं देवीं ईशिकुल्यां सरस्वतीं न सज्जा मन्यु दस्तानां तेषामात्माप्य तृप्यत सतीं व्यदायो शृण्वन्तो लब्धिं गुरुः गौह्यं विगद्या गावगम्भीरा नो बीजोस्तत्कीर्षितम् तेजोगमायारब्ध पारमेष्ठमहोदयं प्रोचु प्राञ्जलयो विप्रा प्रविष्टो कुपितस्य ईशेषु नो वयं भगवन् विद्मस्तभो देवो चिकीर्षितं कृतो मीनु ग्रन्थि अध्यक्षभावस ब्राह्मणेषु परं दैवं ब्राह्मणा किलो ते प्रभ विप्राणां देववानानां भगवानात्मो दैवतं ततो सनातनो धर्मो रक्षति तदनुभिष्टव धर्मेशो परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मत तरन्ति दशामृतुं निर्विचादनुग्रहान् योगिनो सो भवान् किंचित् अनुगृह्यति तत्परे जं वै विभूति रूपदत्यानुबीलमन्यैरथार्थिभिः सोशिरसा धृतपादरे धन्यर्पिताङ्घ्रि तुलसी नवदामधाम्नो लोकं मधुव्रतोपतेरिवो कामयान् दशामिमितचरिते अनु वर्तमानां नाट्याद्रियर् परमभागवत प्रसंग सोतं विजानूप पुण्यरजो पुनीतो श्रीवत्सलस्म किमगा भवान् नष्ट धर्मेषु ते भवदस्तिजुगो स्त्रीभिः स्वै पद्भिः सराचरमिदं दीर्घदेवतातीर्थम् नूनं भीतं तर्विघातिरजस्तममत्यो सत्येनो नो बदरसा तव तनुवा निरीक्ष्य नो त्वं द्विजोत्तमकूलं यदि ध्यात्मा गोपं गोप्ता वृष अष्टहर्णेनो शशूनीतेन तदेवो नैखसि शिवस्तवो देवो पन्था लोको गृह्स्या विषयसो हि तत्प्रमाणं तत्ते हविष्टो मति सप्त निर्वेशितस्य क्षेमं जनायो निशक्ति भीरोद्धीतो नैतावता तद्विपत्तिर्विषु विश्वभर्तुस्तेजो खितं तवो न तैषोति विनोद जङ्वानयोर्ममधीशो भवान् विदत्ते प्रीतिं नु वा तमनो जन्म हि निर्बलीकम् आत्मासु वाजो उचितो धीयतांसो दण्डो धी अनुशासनो वरमुच्छसि कल्किसेन शिवन्वासो येतौ सूर्ये तरगतिं प्रतिपद्य सद्य संरम्भभृत समाधन्यो बद्धरो भूयो सकाशमुपवायेषु आशुजो वो सापो मयैवो निमितस्ततेव विप्रा ब्रह्मोवाच
अथो ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनम् वैकुण्ठं तरिदिस्थानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्य सुमन्यस प्रतिजग्नो प्रतिगीता संसन्तो वैष्णवींस्य भवाननुग्राय जातं माभीष्टमश्रुतं ब्रह्मतेजो समर्थोऽपि हन्तुं निश्चेतं तु मयि संग्राम योगिनो निस्तेजो ब्रह्महिरणं प्रत्यज्ञातं निकासं कालेनाल्पीयसा पुनः द्वष्टा बद्धीशो भगवान् विमानस्यो ईटूषणं सर्वातिशयालेख्यादुष्टं स्वं धिंसमाविश तौ तु गिर्वान् विषवो दुसरन्धा विलोकतः हतसीयौ भ्रमशापं भूत्वां विगतस्मयो तदादिकुण्डवीशनत्ययो निर्गतमानयः आकारो महानासीत् विमानाग्रे पुत्रकाः तायुधिना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरि गीते जठर निर्विष्टं कश्यपं तेजो उल्लङ्घ तयोरसूर योरैश्वते सा जमयो हि वो अकितं तेजो ये तर्हि भावान् स्तुति विंशति विश्वेशो जोष्ठीति लयत् भवेहेतु राज्य योगेश्वरैरपि दुरन्तेयो जो माया किमं विरस्यति शानो सोनो भावान् स्त्रीधीशो शस्त्रास्मदीय विमृशेनो कियानिहार्थ इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंसा संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरो उद्धव संवादे जय विजयो भ्रंश नामो षोडशाध्यायो श्रीमद् राधा कृष्ण प्रीत्यानंद हरि बोल।